આ છે ભૂતનાથ મહાદેવનું મંદિર. એટલે આ મારી જો સીધું ચડે છે. તો ફાઇનલી અમે નીલકંઠ મહાદેવના દર્શન કરીને પાછા રિટર્ન થઈ ગયા છીએ. आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की प्रचलित जगह. અત્યારે ગંગામાં સ્નાન કરી પાછા અમે પ્રયાણ કરી રહ્યા છીએ અમારા ઉતારા તરફ. હર હર ગંગે, હર હર ગંગે. આ છે કુદરતી ઝરણું, ડુંગરામાંથી ઓટોમેટિક પાણી આવે છે. એનું દ્રશ્ય હું તમને દેખાડું. क्या बात है. वाह. अरे पीने दो ना उसको. पीने के दो, उसको पीने दो, पी लो. આ છે કુદરતી ઝરણું, ડુંગરામાંથી પાણી આવે છે. જોઈ લો. ડુંગરામાંથી પાણી આવે. આપ દ્રશ્ય જોઈ શકો છો બધા. અદ્ભુત નજારો. કેવી મજા આવે મેડમ? આ છે ભૂતનાથ. જરૂરથી આવવા જેવું છે. ગજબનો નજારો. આ છે ભૂતનાથ મહાદેવથી અજબ નજારો. આ છે ઋષિકેશ. આ છે ભૂતનાથ મહાદેવનું મંદિર. હર હર મહાદેવ. આવી જાઓ રણજીતભાઈ. આવો રણજીતભાઈ. મહાદેવ. પાછળ જે દેખાય છે ઋષિકેશ. ઋષિકેશ, ગંગાજીનો અદ્ભુત નજારો, પ્રકૃતિનો નજારો. એટલે આ મારી જો સીધું ચડે છે. આ છે ભૂતનાથ મહાદેવનું મંદિર. આ તમે જોઈ શકો છો લક્ષ્મણ ઝૂલા, રામ ઝૂલા, ઋષિકેશ. પાછળનો નજારો જોવો છો, અદ્ભુત નજારો. રામ ઝૂલા, લક્ષ્મણ ઝૂલા. धक्को दिए दिखा. ફાઇનલ આવી ગયા છીએ નીલકંઠ મહાદેવ. ઋષિકેશથી સીધા અમારી ગાડી લઈને આવ્યા હતા અમે. નીલકંઠ મહાદેવ, મહાદેવ હર. તો ફાઇનલી અમે નીલકંઠ મહાદેવના દર્શન કરીને પાછા રિટર્ન થઈ ગયા છીએ. હવે અમે પાછા જઈએ છીએ હરિદ્વાર તરફ. અને મેં નવા ચશ્મા ખરીદ્યા. આ ભાઈ અમારા અહીંયાથી નવા ચશ્મા લીધા છે આજે.
ખૂબ આનંદમાં છે. आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ की प्रचलित जगह जहाँ जहाँ के भगवान ठहरे हैं. हमारे पुराणों में माना जाता है कि हरिद्वार या गंगा का पवित्र किनारा है. यहाँ बैठकर हम अपने मन की शांति ले सकते हैं. चलो यात्री को आज मैं यहाँ सफर करवाता हूँ आपको. पहले मैं यहाँ से आपको ले जाता हूँ कनहल की ओर. आप जहाँ ठहरे हैं उसी को बोलते हैं भूपतवाला. भूपतवाला हरिद्वार का एक हिस्सा है. उसी में से नकलंग धाम में आप लोग ठहरे हैं. ये नकलंग धाम सौराष्ट्र का जग प्रख्यात स्थल बर्फ धाम की ही एक जगह है. यहाँ हर किसी को मुफ्त में खाना मिलता है और नजीबी ना कि कुछ ही कीमत में यहाँ आपको रहने ठहरने की उत्तम सुविधाएं मिलती है. ये हरिद्वार गंगा के किनारे पर बसा है. हम इस सवारी में जा रहे हैं. उसी सवारी को यहाँ की रिक्शा बोलते हैं. यहाँ से हम जाते हैं कनखल की ओर. कनखल यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है. मैं यहाँ आपको दक्ष का यज्ञ बताऊंगा. यद्यपि आपने कभी पुराणों में सुना होगा कि वहाँ शंकर की पत्नी यानी कि सती ने अपना शरीर भस्म किया. उसी जगह में आपको ले जाऊंगा. उसी जगह पवित्र है, हमारे पुराणों में विद्यमान है. यदि एक मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ, क्या आप लोग सुनना चाहते हो? जी जरूर. उसमें लिखा है कनखले तीर्थे पूर्व जन्म विद्यते. ऐसा हमने आपने सुना होगा पुराणों में और सारे कथाओं में ये विद्यमान है. मैं वहाँ आपको स्नान करवाने के लिए ले जाता हूँ. वहाँ स्नान करने से हमारी यही बात है कि हमारा पूर्व जन्म नहीं होता है. पुनर्जन्म का ये अर्थ यहाँ पूर्ण